Hello viewers, most welcome in Math East Academy. So in this lecture we will discuss about Cantor set और ये बहुत important topic है आपका Cantor set और इससे related questions भी हमारे पास हायर मैथमेटिक्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम आज के लेक्चर में हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैंटर सेट क्या होता है और कैंटर सेट की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसको लेटर ऑन लेक्चर्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे हम। तो लेट अस डिफाइन द कैंटर सेट। वो क्या होता है कि हम पूरी रियल लाइन से पहले तो हम -∞ टू 0 ओपन इंटरवल एंड 1 टू infinity रिमूव कर देते हैं, we remain something 0 to 1 क्लोज इंटरवल एंड देन we part it in 3 parts, इसके बीच का पोर्शन रिमूव करते हैं। इस तरीके से रिमूव करते 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 हम जो है सेट्स बनते जाते हैं और फिर उनका हम इंटरसेक्शन लेते हैं, दैट इज योर कैंटर सेट। तो लेट अस राइट इन अ प्रॉपर वे द डेफिनेशन ऑफ अ कैंटर सेट। So let's define first C naught C1 C2 and Cn. So the Cantor set, let's define the Cantor set. The Cantor set defined as is defined as the complement of the union of a countable collection of the joint open set। वही जिन जिन डिस्जॉइंट ओपन सेट्स को हम रिमूव कर रहे हैं वही चीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। डिस्जॉइंट ओपन इंटरवल। ओके, तो लेट्स सी कि कैसे हम उस चीज को देख पा रहे हैं कि कौन से एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। तो लेट अस सी। तो रिमूव लेट्स स्टार्ट। रिमूव फ्रॉम आर मतलब सेट ऑफ रियल नंबर द ओपन इंटरवल that is -∞ to 0 and 1 to infinity। हमने रियल लाइन से ये इंटरवल्स रिमूव कर दिए। अब रिमेन्स हमारे पास क्या बचेगा? वी लेफ्ट विद द क्लोज इंटरवल 0 1। ओके, so then we are left with left with the closed interval closed interval 0 1 denoted by C naught। okay, in this text, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो सी क्लोज इंटरवल 0 1 मिला है इसको हम इसमें से मिडिल पार्ट है 3 पार्ट में अगर डिवाइड करेंगे इस लेंथ को, then middle part will be removed from here। We can just say in the next step we will then delete, just write the things also, delete from C naught the middle third open interval, that will be 1/3 and 2/3। Then we are left with
left with the closed intervals. Closed set, that is your P1 is just equal to 0 to 1 by 3. This is closed interval, and I'm taking union, that is your 2 by 3 to 1. है ना, middle part हमने remove करा. Okay, next we will do like this. Similarly, again we similarly from the two intervals. अब ये जो हमारे पास टू इंटरवल्स मिले हैं इसके अंदर C1 के अंदर, दिस इज 0 to 1 by 3 and 2 by 3 to 1. अब इनके जो मिडिल पार्ट है इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. इसका जो मिडिल पार्ट है, we will remove that open interval from here and here. Okay, we will get remains the 4 closed interval, and then we will take the union of them. Okay, so similarly from the two intervals in C1 in intervals in C1. So what we do, the delete here, you can just write here, delete their middle terms, their middle third open term, third open intervals, and we can just see here कि delete क्या आएंगे हमारे पास. Clearly we can see कि हमारे पास जो open intervals आएंगे, that will be 1 by 9 and 2 by 9 from the closed interval 0, 1 by 3, and another हम open interval remove करेंगे, that is your 7 by 9 to 8 by 9 from the closed interval 2 by 3 and 1. Okay, तो जो रिमेनिंग अब हमारे पास जो बचेंगे क्लोज इंटरवल्स, वो क्या बचेंगे, we will get the 4 open interval and we will take the union of that, so we will form that C2. Okay, so the remaining closed interval, the remaining closed set edge, that is your C2, and that is the union of this remaining closed interval 0 to 1 by 9 first, then union 2 by 9 to 1 by 3. Okay, and then union of this is 2 by 3 to 7 by 9, and then union of 8 by 9 to 1. Okay, so we form these C2, and similarly we will continuing this process up to infinity, so we will get closer to the end points of the interval. Okay, जो क्लोज इंटरवल जो रिमेन्स है उनके एंड पॉइंट्स पे हम जाते हैं, क्योंकि ब्रेक होता चला जाएगा, है ना, डॉटेड लाइनें बनती चली जाएंगी. ओके, so let's write here, continuing this process, of deleting of deleting the third open interval, from each of the closed intervals left from the previous step, है ना.
जैसे ये हमारे पास C2 के अंदर हमारे पास 4 क्लोज इंटरवल्स हैं, उनके मिडिल टाइम के ओपन पार्ट्स को हम रिमूव करेंगे, एंड देन वी विल गेट further will be 8 if open interval. We take the union of that. We will form C3, and similarly we can do like this. So we obtain the sequence like this. We obtain a sequence Cn, C1, C2, C3, C4 and so on of closed sets, है ना, closed sets हमको मिल जाएंगे, closed sets in R, so such that is Cn plus 1 is properly contained in Cn. Contained in Cn. हम एक चीज यहाँ पर देख रहे हैं कि जो C2 है, जो C1 है, that is contained in C0, and this C2 is contained in C1. क्यों? क्योंकि ये जो हमारे पास C2 के जो क्लोज इंटरवल है, दिस इज पार्ट ऑफ फ्रॉम C1 के ही पार्ट है ना, तो दिस Cn plus 1 is properly contained in Cn. ओके, तो नाउ हम देख पाएंगे कि the Cantor set is what? Cantor set C is defined by, that is the intersection of all these Cn's, intersection of Cn, where n is equals to 1, 2 and 3. Okay, so this is defined the Cantor set. This is the definition of the Cantor set. Okay, this Cn is nothing. This C is the sub intersection of all the C. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है. Cantor set is defined like this. Okay, we can also see the geometric representation of it. अगर हम रियल लाइन को देखें और फिर उसके बाद हम देखें कि कौन क्या क्या चीजें बच रही हैं, तो clearly we can see here. समझ गया ना कि हम कर क्या रहे थे कि हमने रियल लाइन से कुछ पार्ट रिमूव करते करते we will get some C1, C2, Cn and up to infinity, and then we are taking it the union of them, and clearly we see कि हमारे पास जो थोड़ी देर बाद अगर हम इसको देख पाएंगे, क्योंकि ये इंटरवल्स छोटे होते जाएंगे, जो क्लोज इंटरवल जो बच रहे हैं दैट इज छोटे होते जाएंगे, तो इनके जो इंड पॉइंट्स हैं दैट विल बी देयर. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि एग्जैक्टली इंड पॉइंट इज देयर, बट दे आर अप्रोक्सीमेटली इन पॉइंट के हम पास पहुंच रहे हैं. तो उनका जो कलेक्शन है वो सारे सच टाइप ऑफ एलिमेंट, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, कैंटर सेट कहलाता है. ओके, so let's see on the geometry, the geometrical representation. Geometrical illustration of C is given as, so I'm just you can just draw the close interval 0, 1 first. तो हमने ये 0, 1 इंटरवल ड्रॉ कर लिया. सपोज दैट एम प्लस 0 और ये हमने 1 ड्रॉ कर. दिस इज योर C0. ओके, अब हम करेंगे क्या, इसके 3 पार्ट्स करेंगे. एक तो 0 to 1/3 and then 2/3 to 1. Okay, so we will remove the middle one. ये मान लो ये है, और इसके बाद ये लास्ट पार्ट है, और ये बीच में ये है. so this 3 डॉटेड 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 इसको हमने रिमूव कर दिया. so we have this is here 0 and this is your 1/3 and this is 2/3 and this is your 1. ठीक है, तो ये मिडिल, तो ये जो रिमेनिंग हमारे पास, तो ये ओपन
इंटरवल हमने रिमूव कर दिया फ्रॉम दिस 0 1 इंटरवल, तो वी फॉर्म जो रिमेनिंग बचा दैट इज योर C1. Okay. And similarly if we want to remove middle from here also, so we can see कि this कितना और फिर कितनी, है ना, ये तो हमारे पास रिमूव ही था पहले से ही, उतना पोर्शन तो रिमूव ही था पहले से ही। अब यहाँ पर हमारे पास कितना, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, तो इट विल बी योर 0 और 1/9 और ये हमारे पास 2.9 आ जाएगा। ये मिडिल टर्म हमने रिमूव कर दिया, दिस इज ओपन पार्ट विल बी रिमूव, open interval, and that will be your 1/3 here, and this is your 2/3, and this is 7/9, and this is your 8.9, and then it will be 1 इस तरीके से। तो ये जो हमारे पास क्लोज पार्ट है इनका यूनियन, तो दिस इज योर C2, and in the same way we will do like this. Okay, तो दिस इज ज्योमेट्री की हमारे पास कैसे जो ओपन इंटरवल से मूव, तो ये जो रिमेनिंग पार्ट्स है जैसे ये क्लोज इंटरवल, ये इनका सबका यूनियन, तो इस तरीके से हम C1 C2 CN फॉर्म करेंगे। और हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि C2 will be contained in C1 and then C3 will be contained in C2 in like this, and we will take intersection of all these, so we will get the end points of the, मतलब looks like we will get the end points of this intervals जो remains है ना, जैसे ये हमारे पास है तो इनके end points है, तो इनको जब हमने करा तो हम इसको और छोटा करते चले जाएंगे, तो इनके इन पॉइंट हमको मिलते चले जाएंगे, तो उनका सबका जो कलेक्शन है दैट इज योर कॉल्ड कैंटर सेट। ओके, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो हम एक छोटी सी जो हम अक्सर भूल करते हैं इसके बारे में लिख देते हैं कि कैंटर सेट जो है तुम्हारे पास दिखेगा तो इट्स अ डिन्यूमरेबल सेट, इट्स अ काउंटेबल इनफिनाइट सेट, बट इट्स नॉट, इट्स अ अनकाउंटेबल सेट। तो हम इसको लिख दे रहे हैं ताकि आप अपनी टेक्स्ट बुक में लिख लिए, ताकि आपको ध्यान रहे, और हम लेटर ऑन वी विल सी, हम इसे देखेंगे कि वो अनकाउंटेबल है, उसको प्रूव भी करेंगे कि हमारे पास जो कैंटर सेट होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ओके, so let's write here by institution it may appear when they say appear that the only points है ना जो हमें दिखेंगे, है ना, लेफ्ट इन द कैंटर सेट, भाई क्योंकि हम वो जो इंटरवल क्लोज इंटरवल जो रिमेनिंग बच रहा है वो श्रिंक होता जा रहा है, वो छोटा होता जा रहा है ना, यू कैन जस्ट आप देख पा रहे हो, मतलब देखोगे कि इस तरीके की चीजें बच रही, बट है नहीं एक्चुअली, है ना, लेफ्ट इन द कैंटर सेट, हम लिख दे रहे हैं 2 लाइनें, कैंटर सेट आर द एंड पॉइंट्स है ना, मतलब क्या है, इन पॉइंट बच रहे हैं, 0 बन रहा है 1/, तो 1 है, 1/3 है ना, 2/3 है, 1/9 है, 2/9 है, एंड 7/9 है, एंड 8/9 है, एंड सो ऑन, इस तरीके से पॉइंट्स बच रहे हैं। और क्लियरली अगर इस तरीके से पॉइंट्स होते हैं तो डिन्यूमरेबल होते हैं, बट यू कैन जस्ट राइट हियर व्हिच आर डिन्यूमरेबल इन नंबर, है ना, बट if we study deep in about the Cantor set we found कि हमारे पास जो कैंटर सेट है वो अनकाउंटेबल है, तो आप लिख लीजिए, बट the deep study of the Cantor set reveal reveals that this impression
इज रॉन्ग है ना, ये रॉन्ग है। एंड दैट द Cantor set and the Cantor set is actually uncountable, एक्चुअली अनकाउंटेबल है ना। इसको हम प्रूव भी करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर, है ना। ये हम ऐसे लिख दिए क्योंकि ताकि आपको ध्यान रहे, और कभी अभी किसी को बताना हो तो यू कैन से कि जब हम Cantor सेट के बारे में ज्यादा जानते हैं देन वी कैन एबल टू से कि वो अनकाउंटेबल होता है। ओके, तो आई होप तो कि आपको चीजें समझ में आई होगी कि Cantor सेट क्या होता है, उसकी डिफिनीशन समझ में आई होगी, है ना। और नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम Cantor सेट की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे कि Cantor सेट हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है। और ओके, so we will discuss the next thing in the next lecture. Okay, thank you so much for watching and keep sharing to other students and other mathematics learners. Okay, thank you so much.